مثالی انسٹیٹیوشن ماشاءاللہ. وہاں ہماری بیٹی فرح ناز اور اس کی پوری ٹیم نے الحمدللہ محنت کر کے اسے ایک مثالی انسٹیٹیوشن کی راہ پر ڈھال دیا ہے جو صدر پیٹ بیان کر رہے ہیں. اس میں ابھی داخلے جاری ہیں. یہاں پہلے 500 طالبات کے لیے مارننگ کلاس گنجائش تھی مارننگ کلاسز میں، اب ایوننگ کلاسز بھی ہیں. ہاسٹل کی بھی نئی بلڈنگ بن چکی ہے اور 500 طالبات کے لیے داخلے کی گنجائش موجود ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مارننگ کلاسز میں، آفٹرنون کلاسز میں میٹرک پاس جو بچیاں ہیں ان کو ایف اے میں، جو ایف اے پاس بچیاں ہیں ان کو بی ایس آنرز پروگرام میں، اور جنہوں نے بی اے بی ایس کر لیا ہے وہ ایم اے کی کلاسز میں داخلے کے لیے منہاج گرلز کالج رابطہ کریں، وہاں سے پراسپیکٹس حاصل کریں اور اپنی بیٹیوں کو اس تعلیمی ادارے میں ضرور داخل کریں، کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ آپ نے اگر ایک بیٹے کو پڑھایا تو ایک فرد کو پڑھایا، اگر آپ نے ایک بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو آپ نے ایک پورے خاندان کی اچھی تعلیم و تربیت کی بنیاد رکھ دی ہے. لہٰذا یہ منہاج گرلز کالج تحریک منہاج القرآن کی آئندہ نسل کی آبیاری کا ایک بہت عظیم ادارہ ہے. اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں اور تحریکی احباب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنی بیٹیوں کو اس کالج میں داخل کریں. اسی طرح کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز جو لڑکوں کے لیے اسی طرح کا تعلیمی ادارہ ہے، جہاں میٹرک کے بعد ایف اے میں درس نظامی کے لیے ایڈمیشن جاری ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے احباب کے بچوں کو بھی اسی کالج میں داخل کروائیں، منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں، تاکہ منہاجینس کی صورت میں تحریک منہاج القرآن کو آئندہ ایک ایسی قیادت میسر آئے جو حضور شیخ الاسلام کے فکر اور نظریے کو لے کر پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی ترویج و اشاعت میں بنیادی کردار ادا کرے. ضروری ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو داخل کرائیں منہاج القرآن یونیورسٹی، منہاج یونیورسٹی کے شریعہ کالج میں. متوسط گھرانے، متمول گھرانے، ذہین بچوں کو بھی داخل کرائیں. ذہین بچے اچھے گھرانوں سے داخل ہوں گے تو اچھی کھیپ تیار ہوگی دین کا علم بلند کرنے والے اور دین کا علم پہنچانے والوں کی. تو شوق اور ذوق سے داخل کرائیں اپنے بچوں کو منہاج شریعہ کالج میں. رزق دینے والا اللہ ہے، صرف دنیا کی تعلیم پر ہی بچوں کو نہ لگائیں، اپنے ذہین بچوں کا اولاد میں سے ایک حصہ آقا کے دین کے علم کے لیے بھی نکالیں. اس سے سوسائٹی میں انشاءاللہ دین کی امامت کا فریضہ اعلیٰ طریقے سے انجام پائے گا. Aitchison College is more than a school. It is a way of life. As I entered its gates on my first day, I wondered what my life for the next 13 years would be like. The main building was the oldest part of the college, and I was the youngest. I looked at the foundation stone, laid in November 1886, and felt dwarfed by the majestic dome that towered above me. Aitchison College was named after Sir Charles Uphurston Aitchison, Lieutenant Governor of Punjab, on the 3rd of November 1886.
The construction of the main building followed the design by Bhai Ram Singh Mistri. He designed the ornate interior, and Colonel Swinton Jacob gave the exterior its distinctive, unique personality. Benefactions by various donors financed the initial campus. The Tiwana Gymnasium, for example, was donated by Malik Umar Hayat Tiwana. इंसानी तर्ज जिंदगी और माहौल में तब्दीली ने ऐसी बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम की परवरिश में इजाफा किया है जिनके इलाज की दरियाफ्त साइंस के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। गुज़िश्ता चंद बरसों से इंसानों को जानवरों और हशरात से मुंतकिल होने वाली कई मूज़ी बीमारियों का सामना है और इनमें हालिया इजाफा डेंगू बुखार है। मगर कई ममालिक में मुकम्मल आगाही और हुकूमती और अवामी सतह पर इक़दामात के जरिए इस बीमारी से बचाव बड़ी हद तक मुमकिन बनाया जा चुका है। डेंगू बुखार का सबब बनने वाला वायरस आमतौर पर नीम गर्म या गर्म इलाकों में पाया जाता है, जो एक खास किस्म के घरेलू मादा मच्छर के काटने से फैलता है, जिसके जिस्म पर सफेद और काली धारियां होती हैं। डेंगू बुखार की अलामात मखसूस वायरस आलूदा मच्छर के काटने के 5 से 7 दिन बाद जाहिर होती हैं और ये वायरस इंसानी खून में 2 से 7 दिन तक मौजूद रहता है। डेंगू वायरस की पैदाइश मौसमी और जोग्राफियाई अनासिर के मिलाप से होती है। इस ज़िम्न में एहतियात के जरिए डेंगू की नशोनुमा को रोकना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि रहन सहन की मामूली तब्दीली से आसान तर हो जाता है। सफाई की आदत को जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाकर न सिर्फ डेंगू बल्कि ऐसी कई बीमारियों से बचा जा सकता है जो अपनी नशोनुमा के बाद वबाई शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। घर में और इर्द गिर्द हर जगह किसी छोटे से छोटे सुराख जहां जरा सा पानी इकट्ठा होने की गुंजाइश हो, डेंगू मच्छर की परवरिश पाने के इम्कानात हो सकते हैं। एक मशहूर मकूला है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अपने रहन सहन को आसानी से एक सेहतमंद माहौल में ढालकर हम इलाज मुआलजे की मुश्किलों से बच सकते हैं। डेंगू फीवर एक वायरस की बीमारी है जो कि किलर डिजीज़ नहीं है, काबिल इलाज है। इसकी अक्सर अलामात बुखार, सरदर्द, उल्टियों का आना और इसके अलावा जिस्म के ऊपर रैश का नमूदार हो जाना या खुदा न खास्ता अल्टीमेट बीमारी के निशानात जिस तरह के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का बह जाना, नाक, कान या गला और पेशाब में ये खून की अलामात नज़र आ सकती हैं। इसको हम डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं। इसकी इंतहाई अलामात के अंदर डेंगू शॉक, जिसके अंदर मरीज़ बेहोश हो सकता है या वो ड्राउजी हो सकता है। ये वो अलामात हैं जिनके लिए आवाम को पूरी तरह से आगाह होना चाहिए। ये अंदाज़े ज़िंदगी कतन मुश्किल नहीं। आपको हर उस जगह को खुश्क रखना है जहां डेंगू मौजूद हो सकता है। हर घर में किचन लाजमी होता है। सिंक के नीचे ठहरा हुआ पानी खुश्क करना और घर के हर कोने को साफ और खुश्क रखना जरूरी है। फ्रिज के नीचे लगी ट्रे, एयर कंडीशनर का पानी, गटर के ढक्कन में बने गड्ढे, गमले, गुलदान और जानवरों के बर्तन वगैरह, घर में इन तमाम जगहों को मुकम्मल खुश्क रखना लाजमी है। जैसा कि आपको पता है कि मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस डेंगू वायरस के मुतालिक आ रही है। ये डेंगू वायरस जो है ये साफ़ पानी और हर किस्म के पानी के ऊपर ही आता है। इसलिए जब तक हम अपना साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट का, उस वक्त तक कभी भी हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इससे डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। टूटी हुई प्यालियाँ, पत्तों की तह में जमा शुदा पानी, कूलर में जमा पानी, कारपोर्च में खड़ा पानी इन डेंगू मच्छरों का मस्कन बन सकते हैं। घर में इन तमाम चीजों और जगहों को साफ रखना लाजमी है। इसी तरह घर के पूरे माहौल को फालतू और बज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाले जमाशुदा पानी को साफ करना और खुश रखना लाजमी है। इलाके की गली या सड़क पर खड़ा पानी डेंगू की नशोनुमा में मुआविन साबित हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम डेंगू बुखार के मर्ज से दो चार हैं। हुकूमत पंजाब ने काबिल इलाज बीमारी के कंट्रोल के लिए ऐसी मुहिम का आगाज किया जिसके जरिए अवाम को हर तरह की इमदाद और आगाही फराहम की जा रही है। इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सहूलतों की फराहमी, ब्लड टेस्ट के कैंपों का क़याम और दीगर कई इक़दामात इस मुहिम का अहम हिस्सा हैं।
हुकूमत पंजाब की जानिब से खादिम पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए अवाम की सेहत और जिंदगी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात अमल में लाए गए और अवाम को न सिर्फ सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गईं, बल्कि डेंगू मच्छर की पैदाइश को रोकने के लिए भी अहम इक़दामात किए गए। इस सिलसिले में श्रीलंकन माहिरीन की खिदमत हासिल की गईं, जिन्होंने न सिर्फ डेंगू के मुतालिक ठोस बुनियादों पर तहकीक का आगाज किया, बल्कि अवाम में आगाही पैदा करने के लिए सेमिनार्स मुनक्किद किए और दीगर प्रोग्राम्स के जरिए इनकी रहनुमाई भी की। डेंगू मच्छर को मारने और इसकी पैदाइश को रोकने के लिए मुतासिरा इलाकों को स्प्रे के लिए 45 करोड़ रुपए फराहम किए गए और हर गली मोहल्ले में स्प्रे को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। इलाज की सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में अस्पतालों में CBC मशीनों की तादाद 8 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और इस मकसद के लिए 24 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की गई। डेंगू से मुतालिक मशवरे और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन बराए डेंगू 0800 99 000 का आगाज किया गया, जहां माहिरीन अवाम की रहनुमाई और मशवरे के लिए 24 घंटे अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस बिस्तरों की तादाद 150 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई। इसके साथ साथ इन अस्पतालों के कॉन्फ्रेंस रूम्स और इंतजामिया के दफातर में भी डेंगू के मरीजों के लिए बिस्तर लगाकर इनके लिए मखसूस कर दिए गए। डेंगू बुखार के ज्यादा से ज्यादा मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत देने के लिए लाहौर के 10 सरकारी फैमिली क्लिनिक्स में तशखीसी मराकज कायम किए गए। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों, खैराती अस्पतालों और NGOs के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले तिब्बी मराकज में ब्लड टेस्ट की सहूलियात और 400 से जायद बिस्तर भी फराहम किए गए। पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा मंडी को डेंगू के मरीजों के लिए मखसूस कर दिया गया और इलाज की तमाम सहूलियात फराहम की गईं। लेबर डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटी के दूसरे अस्पतालों में खसूसी डेंगू वार्ड्स कायम किए गए। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, सफाई के दीगर इदारों, डॉक्टरों, वबाई अमराज के माहिरीन और सहाफियों के ताउन से तरबियती प्रोग्राम्स का आगाज किया गया। 8 करोड़ रुपए की लागत से ब्लड टेस्ट की 100 मशीनें दरामद की गईं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त ब्लड टेस्ट करने के साथ साथ निजी लेबोरेटरीज में ब्लड टेस्ट की फीस 90 रुपए मुकर्रर करके इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। लेबोरेटरीज की जानिब से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। अगरचे हुकूमत पंजाब डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए हर तरह से फाल किरदार अदा कर रही है, ताहम अवामी सतह पर आगाही और एहतियाती तदाबीर की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी अहमियत को समझते हुए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन कोशिश के जरिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है। लिहाजा TV, रेडियो और अखबारात के जरिए अवाम को मुसलसल रहनुमाई फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अवाम की सेहत के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की है ताकि इनकी कीमती सेहत और अनमोल जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इन्हीं मुसलसल कोशिशों के नतीजे में आज डेंगू बुखार में मुब्तला कई जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया गया है। याद रखिए, डेंगू हम सब का मुश्तरका मसला है। हम सब ने मिलकर इसका हल मुमकिन बनाना है। आप मर्द हैं या औरत, तालिब इल्म हैं या उस्ताद, मुलाजिम हैं या इदारे के सरबराह, सब ने मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाना है। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ बनाना है। हमें मिलकर डेंगू जैसी हर बीमारी का खात्मा करना है। यही अज़्म और यही इरादा हमारी डेंगू से निजात का हल है। क्यों ना आज हम कदम से कदम मिलाएं और अपने इस अज़्म की तकमील के लिए एक हो जाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार घर, दफातर, स्कूल और दुकानों वगैरह में सफाई करके मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे करें और दरवाजे 1 घंटे के लिए बंद कर दें। पानी जमा करने के बर्तन मसलन घड़े, ड्रम, बाल्टी, टब और टैंकी वगैरह को सही तौर पर ढांप कर रखें और बाकायदगी से खुश्क करके साफ करें। रूम कूलर वगैरह जब इस्तेमाल में ना हो तो इनमें से पानी खारिज कर दें। मच्छरों से बचाव के लिए कॉइल, मैट, मच्छर भगाओ लोशन और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घरों के अंदर, इर्द गिर्द, छतों, पौधों की क्यारियों, गमलों, पुराने बर्तनों और टायरों वगैरह में पानी जमा ना होने दें। इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। शॉपिंग बैग, खाली बोतलों, कचरे और गंदगी को बाकायदगी से तल्फ करें। परिंदों और जानवरों के पानी के बर्तनों को बाकायदगी से साफ करें। रोजाना पानी तब्दील करें। बिला जरूरत इनमें पानी ना रहने दें। घरों में मौजूद फवारों, आबशारों, स्विमिंग पूल वगैरह का पानी निकालकर इनको बंद कर दें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं। गंदे कपड़े और जुराबों को जमा ना करें और इनको जल्द अज जल्द धोने का एहतमाम करें।
मजीद मालूमात के लिए मुतल्लका EDOH के दफ्तर या टोल फ्री नंबर 0800 9900 पर राब्ता करें। Mistreatment. That's what one veteran received at the VA hospital, according to her caretakers and a federal lawmaker. They all want answers, and they've asked Contact 13 Chief Investigator Darcy Spears to tell this story to help ensure no other veteran goes through the same thing. Thursday, December 12th. 78-year-old Navy veteran, mother, medic Sandra Nickum is laid to rest, surrounded by friends and admirers. Sandy Nickum was a wonderful advocate for any veteran. She was outstanding with blinded
veterans. Blind herself as a result of diabetes, Sandy dedicated more than 5,000 volunteer hours to the VA Southern Nevada health system. Her house is filled with photos and memories of a life of service, but her death and the time leading up to it is the story her caregiver and aide are bound to tell. And I told her, I said, Sandy, please, I don't want to tell this story. And she said, Dee, you have to. The Review-Journal first published the story at Sandy's request. She wanted this article and this newscast because she did not want any other veteran to go through what she did. Sandy's ordeal began in the late summer with a visit to the VA hospital's emergency department for some tests. We got checked in to ER, and we waited at least 4 hours. Shirley Newsham says Sandy, a brittle diabetic, never went anywhere without her insulin kit. But Shirley says staff at the VA hospital told Sandy, if you're not going to give up your medicines, then we're going to have to escort you out of the hospital. Hospital Director Isabel Duff denies that, but she cautions patients who take their own medication in an acute hospitalization, that's just not something that happens because it can interfere if we don't know. We could actually cause her great harm. Sandy had to go back to the hospital on October 22nd for more tests as her health continued to decline. Dee says the nightmare started all over again when radiology couldn't find Sandy's orders in the computer. The gentleman got up, and Sandy was sitting there, and he slammed the window down. So it was back once again to the ER, where Dee says the nearly 6-hour wait pushed Sandy over the edge. And that's when she would just hit her cane on the floor and say, please, God, please, somebody help me. Please, some doctor, help me, help me. No one even cared. No one even looked up. I just thought, wow. These pictures document Sandra Nickum's state as she sat waiting in the VA's emergency department. This was so terrible. It was a nightmare. That's why I took one of the pictures on my iPhone that this was really happening, and to her. The VA admits it can improve on treating special needs patients, though patient privacy laws prevent them from talking about the specifics of Sandy's care. Isabel Duff says the veteran and her aides got it all wrong. Her chronology does not match what we have documented. What about her constant pleas for help that they claim were ignored? Well, what I can tell you is the document, our notes show continued intervention and assistance and treatment, even ongoing, during a time that the ED was very, very busy and her evaluation was progressing. She says Sandy misunderstood doctors' orders and refused care and offers of assistance that could have made her experience better. I can tell you that her care was appropriate. You've pointed out that what I'm hearing is that Sandy reported that she didn't feel that she was treated appropriately. We are looking at that. Dina Titus and other members of the House Veterans Affairs Committee are also looking at Sandy's case. Congresswoman Titus sent this statement saying, "I was appalled to learn of the shocking mistreatment of a veteran who had given so much to our country and community. I am eager to learn the results of the hospital's working group and the actions they plan to take to ensure no other veteran suffers from a similar experience." Sandy died November 15th due to complications from an earlier diagnosis of colon cancer. Her suffering is over, but her story and her service will live on. Darcy Spears, Channel 13, Action News. The House Veterans Affairs Committee has asked the VA for surveillance footage so they can see Sandy's ordeal for themselves. Darcy will stay on top of their inquiry. In her first interview with the Review-Journal since taking the reins of the Veterans Affairs Southern Nevada healthcare system, Director Isabel Duff discussed the emergency room ordeal experienced by blind veteran Sandy Nickum as she waited for treatment of a colon condition a few weeks before she died on November 15th. A witness who escorted Nickum to the North Las Vegas Medical Center said the 78-year-old Navy veteran cried for help while she waited in pain for 6 hours on October 22nd, only to return 2 days later to finish tests. She was having an evaluation completed.
And that does entail waits for information to be able to come back to provide the appropriate medical care. And some locations are better than others for treating those evaluations. We take the patient preference and try to work with that. And in this case, there was a patient preference. In the interview Friday, Duff revealed that video surveillance footage requested for an Inspector General's probe essentially doesn't exist because a contractor hasn't been able to retrieve the video. The videotapes are not available. There is an automatic deletion, and I'm not going to give you the time frame because I want to make certain that I give the accurate time frame. What I did do was, when we couldn't retrieve them, we contacted the contractor to see if there was anything that they could do in order to, what would you call it, recover them. And so the contractor came and tried to recover, and that digital tape is no longer available. Duff offered her perspective of the situation and expressed her expectations of what she hopes to accomplish as she guides the local VA healthcare system and its staff into a new era. As I said, I accepted the position here September 22nd. Las Vegas is now my home. This is now my facility. And one of the things that I have experienced being here, and Las Vegas is a big city, but it has a very small town feel to me, which is really good. The VA is very important. There is a real caring and support for veterans and for VA here, which is critical to our success. We need that support. We can't do our work without that. Can we make everybody happy all the time? No. For me, the mettle of an organization is how does it respond when something goes wrong? Now, if something goes wrong and goes wrong and goes wrong, and things are not put into place, something can happen, and what I count on is that those safety nets don't allow it to continue. Where I'm concerned is if something happens and it goes through another pair of hands and another pair of hands and another pair of hands, and we didn't take that opportunity to stop it. But you're right, we are people taking care of people. Thanks for joining us. After serving their country, some Las Vegas veterans feel betrayed here at home. An uproar from that community over mistreatment at the VA Medical Center in North Las Vegas has sparked an investigation, and it could lead to changes in veteran medical facilities across the valley. Brian Brennan has more on some of the shocking complaints. Allegations of rude hospital staff and extraordinarily long waits have been in the news for months. Since then, more and more veterans have come forward. The people we talked to say they are hoping changes will finally be made. I corrected it. Chris Christoph doesn't keep photos of his time in the Marine Corps. He tries not to think about the friends he lost in North Korea. But every day, old injuries serve as a reminder. Where the Jeep flipped over caused my leg to get torn apart. War wounds have gotten worse with age. He says complications with arthritis and his hearing have made him very familiar with long waits and poor attitudes at the VA medical facilities across the valley. It's like you're in the military. You sit down, shut up, and hope that somebody takes notice to you. A service officer at the VFW post near Nellis Air Force Base works with veterans every day. He says complaints like Christoph's are far too common. A lot of my veterans are complaining. They'll go enroll, and then what happens, they tell them, oh, we can't get you in to see a primary care doctor at least for 6 more months. Well, what do we do for 6 months? The House Veterans Affairs Committee is already investigating the VA Medical Center in North Las Vegas after a reported case of mistreatment. Congresswoman Dina Titus says she's talked to the director of all the VA medical facilities, Isabel Duff, to make sure changes are made. She knows that that's unacceptable and that we want our hospital to be the gold standard for both caring and customer service. Chris Christoph says veterans deserve to have the problem fixed. We all make mistakes, and they do not own up to their mistakes. He also says they deserve an apology.
A spokesperson for the VA Southern Nevada Health Care System called us back just a few hours ago. He says he could not comment on the specific investigation at the VA Medical Center in North Las Vegas, citing HIPAA laws, but did say if they ever find flaws in their system, they work to fix them. I think every person in this room knows the seriousness of this problem, but I specifically want to underscore how this is affecting veterans in Nevada. 4,000 veterans in Reno, Las Vegas, across Nevada are waiting for their VA target deadline of 125 days for their claim to be delayed, to be completed. They're waiting more than 125 days. On average, Nevada veterans wait 436 days to have their claims completed, and this is the longest wait of any regional office in the nation, and I think we can all agree that this is unacceptable. But I think it's important to me and my constituents to bring this one particular story to your attention. A Las Vegas veteran wrote me recently, I'm just one more disabled veteran still fighting the appeals process with the VA. I understand now that no one is going to expedite my appeal, and I will probably die before I get any successful resolution. But there are a huge number of vets just like me, and some in worse shape. None of us deserve to be put on hold forever. Frustration. And that is what this veterans and veterans across the nations are feeling. The reality is the VA has a 1945 process. This outdated process no longer makes sense for the VA and for the veteran. Looking back at 2 decades of VA backlog, I found the VA has always fixed the problem with short-term solutions rather than asking the difficult question of whether the entire process needs to be updated. No longer makes sense to point fingers and to place blame as we have for quite some time now. Instead, Congress needs to meet and give the VA and regional office the tools and resources they need to bring the backlog down. But this cannot be done without an open, frank discussion about what's working and what's not. Our nation owes it to veterans to resolve this problem together, keep our promises, to care for them when they return home from war.